Hello children, welcome back to my channel. I am Niharika Tiwari and today I am going to start with the series of class 10th ICSE, and the chapter which I am going to start is chapter force. Many of you have requested me that ma'am please start with the videos. So on your request I am starting again, and today we are going to start with the chapter force. Okay, this is chapter 1. It will be helpful to both ICSE as well as CBSE students. So, children, stay connected with my channel, and I promise you, if you are going to give your love and support, I'll surely complete your full syllabus. So, without wasting a time, let's start. So, children, your very first chapter is force. Now, what is force? You already know, you have studied many times from class 8th onwards. Okay, that force is an external push or pull, okay, which creates change in shape and size of the object. Okay, so when you apply any external push or pull on the object, what happened? There is a change in shape and size of the object, and that is only force. All right. Now, if you apply a force on, suppose if you apply a force on a free body means a body which is simply placed on the surface. And if you're going to apply force on that, so what will happen? The object will move in the forward direction, or it will have a linear or translational motion. Okay, linear or translational motion means straight line motion. Okay, the object is nowhere connected, it is just simply placed on the floor or any surface, and if you are going to apply a force on it, so what will happen? Object will have a linear motion. But suppose what happened that if the object is connected to some point, or you can say if the object is pivoted to some point, suppose this is some fixed point, okay, and through this point the this rod is pivoted, and now if you are going to apply the force on this rod, is it going to move in the forward direction? No. What will happen? Instead of that, the rod is going to turn. Okay, because it is pivoted at this fixed point. Okay, and this will create what? This will create a turning effect. This will create a turning effect, and this turning effect is known as moment of force. So, what is moment of force? Moment of force, moment of force. Okay, moment of force, you can define the turning effect of the force. But when does the turning effect of the force can be created? When the object is fixed at certain point. अगर कोई object किसी certain point से fix है, suppose this rod is fixed, and then if we are applying a force, okay, this point where suppose I'm this point which I'm pointing with this red color, this is point of application of force. Point of application of force. Okay, so if you are going to apply a force on point of application of force, and suppose this object, this rod is fixed at this point A, so if you are going to apply the force on this object or this rod, instead of moving straight, what will happen? It will turn or rotate, and this turning effect of a force is known as moment or moment of force, or simply what? Turning effect of force. I hope it is clear. Now let me give you one daily life example. Daily life example is, suppose the doors, or you can say the door at your home. Look at the door which is connected at your home. Now you know that door is fixed at hinges. Yes. And what do? There is a handle on the door, and when you apply a force on this handle, what happened? Door either rotate clockwise or anti-clockwise, means it produces a turning effect. Why does the door produces a turning effect? Because doors are also fixed or pivoted. Fixed को हम pivoted भी बोलते हैं, at a hinges. Doors are fixed or pivoted at the hinges, and since it will produce what? Turning effect, which is known as moment of force. तो बेटा moment of force simply क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पोजीशन से क्या होता है? फिक्स होता है, और तब आप उस ऑब्जेक्ट, सपोज ये रॉड है और ये एक फिक्स पोजीशन से फिक्स है ए पॉइंट पे, और तब अगर आप इस रॉड पे कोई फोर्स लगाओगे, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल हैपन? इट विल
turn or rotate, and this turning effect is known as moment of force. I hope it is clear, children. Now, class 10th, if you will give your love and support to me, surely I am going to complete your full syllabus. But my request is that you need to support me. That will give me motivation and I'll do that. But हाँ, मेरे explanation में कोई कमी नहीं रहेगी बेटा आपको. बस I want your support. Now, children, till now you have clear that what is moment. भाई आप moment of force को बोलते हो moment भी कहते हो, moment of force भी कहते हो, turning effect of force भी कहते हो. Now what is the formula for moment of force? Moment of force का formula क्या होता है? Force into moment arm d. तो इसका मतलब moment of force किन दो चीजों पे डिपेंड है? फोर्स पे डिपेंड है, मतलब व्हाट फोर्स यू आर अप्लाइंग, और दूसरा मोमेंट आर्म पे डिपेंड है. तो कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड. तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड द मोमेंट आर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. ओके, नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मतलब लेंथ की बात हो रही है, न्यूटन. सो व्हाट इज दिस? न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ force. Now what is moment arm? इतनी देर से I am talking about moment arm, moment arm. What is moment arm? Now children, again I'll take a door. Now you know doors are fixed at certain point. Those are known as hinges, or you can say doors are pivoted. Now you have usually noticed that in door the handles are put at the periphery, or you can say that at the outer edge the handles are put. Why it is so? So the reason is there that this, if we are going to put this handle at the edge of the door, what will happen? It will create a maximum moment arm. This moment arm D. Okay, this moment arm D. So what is moment arm? The distance between the fixed point, okay, and the point of application of force. जहाँ पर handle है ये क्या है? Point of application of force. ठीक है, point of application of force है. तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर मोमेंट आर्म. और जितना ज्यादा ये मोमेंट आर्म होगा उतना इजीली क्या क्रिएट होगा? टर्निंग इफेक्ट. सपोज चिल्ड्रन, अगर हम इस डोर में, अगेन आई एम टेकिंग डोर, अगर इस डोर में हम हैंडल को यहां से हटा के हैंडल को वी पुट इन द मिडिल, so what will happen? Will it is going to create a easy turning effect? No, it is not going to create a easy turning effect. आप खुद नोटिस करो कि अगर आप हैंडल को यहाँ आउटर एज से हटा के अगर आप सेंटर में लगा दोगे तो क्या ये इजीली डोर टर्न या रोटेट हो जाएगा? नहीं, बिकॉज व्हाट हैज बीन रिड्यूस्ड? moment arm has been reduced. And what is moment arm? The distance from a fixed point where the doors are connected and the point of application of force. This handle is the point of application of force. तो ये आपका d distance क्या हो गया? Decrease हो गया, and hence it will create a less turning effect. That is why we say that in moment of force, it depends on 2 points, either point of application of force or this moment arm d. तो जितना maximum moment arm होगा मीन्स जितना दूरी फिक्स पॉइंट से जितनी दूरी पे हैंडल लगा होगा दरवाजे पे उतना इजीली यू कैन रोटेट और टर्न द डोर. So that is why moment of force depends on two factors, that is your force applied and the moment arm. I hope it is clear to you children. Now I have talked about the SI unit. If I talk about the CGS unit of force, CGS unit of moment of force, तो moment of force की जो CGS unit होती है, you know what is the formula? Force into moment arm D. तो इसकी CGS unit क्या हो जाएगी? भाई force की CGS unit आपकी क्या होगी? What will be the CGS unit of force? डाइन. ओके, एंड मोमेंट आर्म मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर, सो डाइन सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, और एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर. आई होप चिल्ड्रन इट इज क्लियर टू यू. नाउ चिल्ड्रन, बोर्ड में इस बार 2023 में क्वेश्चन आया था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यू नो देयर आर टू डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे आपकी दीवार घड़ी घड़ी जो होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है, कैसे मूव करती है? इट मूव्स लाइक दिस. यस, सो दिस इज क्लॉकवाइज. और इसके अपोजिट डायरेक्शन या रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव
and anti-clockwise direction is always taken as positive. Okay, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. तो एंटी क्लॉकवाइज जो वॉल क्लॉक के हैंडल या जो भी नीडल है उसके ऑपोजिट चलता है, और क्लॉकवाइज जस्ट लाइक अ वॉल क्लॉक. Okay, and clockwise is always negative and anti-clockwise is always positive. So children, I hope it is clear to you. Even children, this turning effect या moment of force को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं torque. ठीक है, जब आप 11th में जाओगे तो ये वर्ड ज्यादा कॉमन हो जाएगा. तो इधर यू से टॉर्क, इधर यू से मोमेंट, इधर यू से मोमेंट ऑफ फोर्स, इधर यू से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऑल आर सेम. आई होप चिल्ड्रन इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, आपके बोर्ड में ये सवाल पूछा जा चुका है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड. तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म डी. क्लियर. एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर. सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन सेंटीमीटर. दूसरा बोर्ड में सवाल आ चुका है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपका? पॉजिटिव. सो आई होप चिल्ड्रन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, एसआई, सीजीएस, मोमेंट आर्म and clockwise and anti-clockwise direction. I hope children it is clear to you. In next video I'll continue the same chapter. So stay connected. Please like and share. Subscribe my channel. Okay. Thank you children.